गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे पाकिस्तान के विभिन्न पन्ने और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ है मेरा पुराना कोर कमांडर, मेरा बॉस जनरल हसनैन। सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। Good evening, and thank you very much for inviting me for the program. सर, थैंक्स अ लॉट सर। आजकल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट बन रहा है और उसके साथ साथ और कुछ भी हो रहा है। आर्मी के अंदर कुछ खलबली मचा हुआ है, अंदरूनी तहकीकात हो रहा है। वैसे उनका अर्थव्यवस्था बिल्कुल इट्स इन अ बैड शेप। तो व्हाट आई डू सर, आज इससे पहले कि भी डिस्कस हर एक पन्ना अलग अलग और योर व्यूज ऑन इट, आई जस्ट गिव यू इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा मैं पाकिस्तान का के अंदर क्या हो रहा है, एंड इट्स लार्जली पिक्टोरियल एंड विल गो थ्रू दिस। ये डॉन में निकला आज। Arifa Noor has written this, and she says the election is over, government formation underway, and the uncertainty of who will govern is coming to an end. But unlike a short Hollywood film, our crisis is not about to end. In fact, this is a long Bollywood film where one dramatic moment comes midway at the interval, allowing for a smoke, a trip to the restroom, and some food before the drama resumes. The fear is that the second half will be as suspenseful as the first, with little signs of a happily ever after. Indeed, on the ground in Pakistan, the indications so far are of friction and confrontation. This will manifest itself between the provinces, putting pressure on the federation as well as among various political actors. The country's western part is most critical here. That's the heartland of Punjab. And of course, this article in Dawn, हम हमारे देश में हम डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, या पाकिस्तान में अभी डबल ड्राइवर सरकार होने वाला है। और ये बात वहीं रुकता नहीं है सर, कि तीसरा ड्राइवर जो है वो पीछे चलाने के चक्कर में है। ऑलरेडी इज गॉन टू द IMF. Things are not going to be easy. And of course, Pakistan's debt liabilities, in terms of dollar terms, it has gone 1.5 times in the past 10 years. And in real terms, it's about 1.9 times. तो डेट बहुत बड़ा है पाकिस्तान के अंदर। और अगर आप देखिए तो सिर्फ 24 में इनका 50 बिलियन डॉलर का डेट रन चुकाना है, और आगे भी इनका काफी है। पर ये 50 बिलियन डॉलर इस साल कहीं किसी सूरत में ये चुका नहीं सकते। So this will carry forward, and they will be under this tremendous debt for years to come. There's no doubt. And if you look at it, these are all Pakistani data, sir. This is from Tabadla Labs, which has done this report, extremely good report on Pakistan. It has come out in Dawn also. I picked up photos straight from that. And he says, the debt actually is about 3.5 times what it was in 2011 per Pakistani citizen, if you go through it in detail. And of course, there are inquiries being conducted within the Pakistan army against corps commanders and major generals. So we don't know where this whole story will go. So this is the state of Pakistan, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। अलग अलग पन्ने हैं, and we'll be more than happy for you to expound on these words, sir. All yours, sir. मैं शुरुआत करता हूं with some few basic observations. आपके observations बहुत relevant हैं. I'll have a few other relevant Yes, sir, please. Things on it, and then we will open it out for a more discussion between us. देखिए, पहले तो there is everything which is negative which is happening there. There's no doubt about it, and we are not even looking at foreign policy. अभी तो हम सिर्फ अब सब कुछ इंटरनल देख रहे हैं इनका। अभी तक essentially आपकी रिपोर्ट जो अभी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं वो सब इकोनॉमिक है, and that is the most severe challenge that they have in front of them. Having said that, politically ऐसा कुछ माहौल नहीं बन पा रहा है जिससे कि हम कह सकते हैं कि गवर्नेंस will take shape, because 29 फरवरी को इनकी असेंबली को मिलना है. As per the law, 21 days after the elections they must meet, so it will meet. अभी तक ये भी अनसर्टन है कि
what is the division of the reserved seats, क्योंकि रिजर्व सीट्स जो है वो सिर्फ कायम की हुई जो पार्टीज हैं उनके पास जा सकती हैं, इंडिपेंडेंट्स के पास नहीं जा सकती है। एंड अनफॉर्चुनेटली द इंडिपेंडेंट्स देमसेल्व्स वो भी इसके ऊपर अपना क्लेम कर रहे हैं कि हमारे इतना परसेंटेज है इंडिपेंडेंट्स का हु आर एक्चुअली सपोर्टिंग द पीटीआई, तो हमको भी ये सीट मिलनी चाहिए, मगर इसका कोई अभी तक अंदेशा नहीं लग रहा है इसका होने का। सो एक्चुअली द इलेक्शन हैज स्टिल नॉट मैनिफेस्टेड इनटू अ कंप्लीटेड इलेक्शन। अभी भी इलेक्शन जो है वो हंग इलेक्शन है, क्योंकि वो स्टेज पे है। जब तक के एज पर पाकिस्तानी लॉ, जब तक के 100% ऑफ द लेजिस्लेटर्स, इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स हैव बीन गिवन इन्विटेशंस टू कम टू द पार्लियामेंट, टू द असेंबली, तब तक ये बात पूरी नहीं होगी। और 100% of the legislators can only be once the reserved seats have been decided. So this is still a challenge which is still left internally to be resolved. दूसरा, काफी गिव एंड टेक के बाद ये दोनों पार्टियां जो हैं पीपीपी और पीएमएल, इनका अग्रीमेंट हुआ है, एक्सेप्टेंस हुआ है, दे गॉट अलोंग वेल। जब पीडीएम 1 था 1.0, उसमें तो इनकी काफी बनी। आई वाज आल्सो सरप्राइज कि इतनी ज्यादा उनकी उस वक्त बनी। मगर अब जो है, अब ये देयर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट नोशन व्हिच विल कम अप नाउ, बिकॉज यू सी द पार्टनर्स आर देयर टुगेदर, बट ईच इज आल्सो लुकिंग एट द फ्यूचर कि मेरी स्पेस जो है, पॉलिटिकल स्पेस, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब मुस्लिम, यू हैव सीन द पीएमएल, दे हैव आल्सो गॉट लाहौर मिल गया, पंजाब उनको मिल गया, मरियम नवाज हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर देयर, गोइंग टू बिकम द चीफ मिनिस्टर देयर। तो वो स्पेस पीपीपी के लिए नहीं है। एंड दे नो, एवरीवन नोज दैट पंजाब इज द हार्टलैंड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो तो पंजाब है यहाँ पर। तो द पीपीपी will also be looking for ways of how to manifest its own influence in these areas. तो ये इनके अनबन की शुरुआत जो है वो यहां से बनती है। हर दफे ये कोalition के अंदर होता है, अनलेस यू आर बड़े कट्टर तरीके से आप लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो, मगर सबको मालूम है कि एक फ्यूचर जो है वो दोनों के लिए अलग है। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर अपने आप को जरूर समझते होंगे, मरियम नवाज अपने आप को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर समझती होंगी। तो आई एम श्योर द टू फैमिलीज हैव गॉट दिस एस्पेक्ट इन माइंड कि टक्कर एक वक्त आएगी कभी ना कभी। इट कांट हैपन दैट दे कोऑपरेट टू सच एन एक्सटेंट के एक दूसरे की जो पॉलिटिकल स्पेस है वो किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाए। माय नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज ऑफ कोर्स ऑन द आर्मी, द रोल ऑफ द आर्मी। देखिए, आर्मी ने जो भी रोल प्ले किया है, दे हैव wanted to make sure कि they continue to rule the roost, पीछे से वो ही किंग मेकर्स बने, और फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जो है उसको तो कम से कम they will have to keep guiding it throughout, not guiding it, in fact controlling it at all times. उसको करने के लिए they need the army chief needs a certain control to make sure कि इंटरनली पाकिस्तान आर्मी के अंदर कोई डिविजन्स ना हो ना। ये एक ऐसी फौज है जिसमें ट्रेडिशनली पहले डिविजन्स नहीं हुए थे, एथनिक लाइंस के ऊपर भी डिविजन ज्यादा नहीं हुए थे, मगर अब क्योंकि एथनिसिटी के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है, 4 रीजन जो है, इनके 4 स्टेट्स जो है, उनको अलग अलग पार्टियां अब रूल कर रही हैं, दैट एस्पेक्ट ऑफ रीजनलिज्म एंड एथनिसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और मैं समझता हूं कि ये इसके ऊपर इंपिंच करेगी पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी। ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान आर्मी ने शुरुआत की थी कट्टरपंथी की, इस्तेमाल किया था कट्टरपंथी को एज ए वेपन अगेंस्ट इंडिया, एसेंशियली अगेंस्ट इंडिया, हमारे खिलाफ ही करने के लिए उन्होंने कोशिश पूरी की थी। अब वो चाहते हैं कि उस कट्टरपंथी को बंद करें, क्योंकि वो उनके ही खिलाफ जा रही है। इसको बंद करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हालांकि कट्टरपंथी जो दल हैं, पार्टियां हैं, उनको इलेक्शन में कुछ दर्जा नहीं मिला है। दे हैव हार्डली गॉट एनी सीट्स एट ऑल। इनफैक्ट पीपल लाइक मौलाना फजल रहमान जो है वो खुद भी हार चुके हैं, वो अपनी भी सीट हार चुके हैं इस इलेक्शन में, तो उनको नहीं मिला है। मगर
पाकिस्तान की हिस्टोरिकली अगर देखे जाए, ऐतिहासिक तरीके से देखा जाए, तो कभी भी यहाँ पर कट्टरपंथी दलों को, कट्टरपंथी पार्टियों को ज्यादा यहाँ पर सीट नहीं मिली है। मगर इसके बावजूद जो सड़क है, स्ट्रीट है, उसके अंदर कंट्रोल जो है वो काफी हद तक कट्टरपंथी दलों का रहा है all these years, and it has been to the assistance of the Pakistan Army. The Pakistan Army has also sort of encouraged it. उससे उनका भी स्टॉक जो है बढ़ा है, उसी से उन्होंने रिक्रूटमेंट किया है अपना फॉर द प्रॉक्सी वॉर इन इंडिया एटसेट्रा। तो ये चीजें अब बदलेंगी, पाकिस्तान आर्मी कोशिश करेगी इसको बदलने की। जब ये बदलने की कोशिश करेगी, देयर विल बी अ पुशबैक पहले भी हो रहा था, वही पुशबैक अब चलेगा और ज्यादा। और आप देखेंगे कि दैट इज वेयर कॉन्फ्रंटेशन, पाकिस्तान आर्मी का जो कॉन्फ्रंटेशन है, इट विल क्रिएट एन इंटरनल डिसेंशन विद इन द पाकिस्तान आर्मी। दिस इज समथिंग दैट दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट। आसिम मुनीर साहब की पर्सनालिटी जो है अब उभर रही है। देख रहे हैं हम कि शुरू में जब आए थे थोड़े हिचकिचाहट में थे वो, ही वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। 9 मई के इंसिडेंट के बाद उनकी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ी थी, जब लाहौर में जब प्रॉब्लम हुए थे। और तब से अब तक जब ये इलेक्शन के अंदर अब सक्सेसफुली सरकार बना दी है और सरकार उनके जो चाहते थे वो ऐसी सरकार बनी है, ऑब्वियसली इट विल गिव ओडल्स ऑफ कॉन्फिडेंस टू द पाकिस्तान आर्मी एंड हिज चीफ। मगर अंदर जो डिसेंशन जिसकी मैं बात कर रहा था वो लाइव है। और अब इस वक्त कोशिशें बहुत होंगी, जैसे कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बड़ी कोशिशें हो रही हैं कि कैसे ये कंट्रोल किया जाए इस डिसेंशन को। लोग जो जाने माने हैं, पीपल हु आर लॉयल, पीपल हु आर नॉट लॉयल, पीपल हु आर फेंस सिटर्स, इनको कहां से कहां पोस्ट किया जाए, किधर से कहां निकाला जाए। सुना है कि पाकिस्तान एमएस ब्रांच जो है, मिलिट्री सेक्रेटरीज ब्रांच, हम दोनों इंडियन आर्मी के एमएस ब्रांच में थे एक जमाने में। देखिए ये पाकिस्तान की जो एमएस ब्रांच है बड़ी बिजी है आजकल, सुनना है, और बहुत ज्यादा पोस्टिंग्स के ऊपर निगरानी दी जा रही है कि कैसे, किस तरह से, किस पक्ष में कौन है, उसको वहां पर से हटाया जाए या उसको वहां पर लगाया जाए। नो, नन ऑफ दिस स्पेल्स एनी कॉन्फिडेंस अबाउट द स्टेट ऑफ गवर्नेंस एज फार पाकिस्तान इज कंसर्न। और पाकिस्तान को खास तौर पे इस वक्त गवर्नेंस की जरूरत है। अभी तो क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने बात भी नहीं की, छेड़ी भी नहीं है। और इस साल देखेंगे हम जून जुलाई अगस्त के महीने में किस तरह से जब बाढ़ें आएंगी पाकिस्तान में, तो क्या असर होगा पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर उस वक्त। तो मैं समझता हूं, मैंने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बिल्कुल बात ही नहीं की है। इस वक्त सिर्फ 2 चीजें मैं फॉरेन पॉलिसी की बारे में शायद बता दूं। एक तो अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता किसी तरीके से कि कोई जो रिलेशनशिप है, संबंध है, वो किसी तरह से इंप्रूव किए जाएंगे और या कर पाएंगे, क्योंकि तालिबान भी, अफगान तालिबान जो है उसने भी महसूस कर लिया है, रियलाइज कर लिया है, दे हैव अ मिशन। अफपैक रीजन जो एक जमाने में आईएसआई का पूरा डोमिनेंट रीजन था, जहां पर अफगानिस्तान तालिबान यूज्ड टू प्ले अ सेकेंडरी रोल, अब जो है उसके अंदर अफगान तालिबान चाहता है कि वो प्रीडोमिनेंट फोर्स हो, एंड द आईएसआई शुड बी लुकिंग अप टू देम। नाउ दिस इज अनदर कॉन्फ्रंटेशन इन द मेकिंग which is going to bring Pakistan to a sorry state in the years to come. Second aspect is of Pakistan-US relations. China के ऊपर हम लोग अलग बात करेंगे, मगर Pakistan-US relations. If there's any country, any nation which will maintain a strong relationship with Pakistan, I have no doubt, is the United States of America. ये ऐतिहासिक तौर पे हिस्टोरिकली इट्स हैपेंड। जब भी उन्होंने कोशिश भी की है पाकिस्तान का हाथ छोड़ने में, वो बाय सम कंपल्शन वापस आ गए और वही हाथ पकड़ा है फिर से, और फिर वही संबंध बने। तो आपने देखा था बीच में कैसे पाकिस्तान को बिल्कुल अलग कर दिया था और फिर $450 मिलियन की डील की थी F-16 के ऊपर, रिफर्बिशमेंट ऑफ F-16 के ऊपर की थी। 600 मिलियन की कैसे एमुनिशन खरीद कर यूक्रेन को देने के लिए इनको बेल आउट किया था एट द टाइम व्हेन दे वर डाउन एंड आउट एब्सोल्युटली इकोनॉमिकली। तो ये अमेरिका से एक्सपेक्टेड है। और हम अगर समझते हैं कि हमारी जबरदस्त हमारे संबंध बन रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के वजह के साथ, और उसकी वजह से भारत यूएस के संबंध के वजह से यूनाइटेड स्टेट्स जो है
वो अपने संबंध पाकिस्तान से किसी तरह से कमजोर करेगा, तो मैं समझता हूं ये गलतफहमी है. And I think I'll rest my case here so that we can continue our discussion. थैंक यू सर, आपने बहुत दो चार अच्छे पॉइंट दिए, बट माय मेन पॉइंट विच यू टच्ड इज दैट हम सबको पता है कि पाकिस्तान डिपेंड एक्चुअली ऑन द आर्मीज. The army is Pakistan and Pakistan is the army. We all have we've known it. And for the first time, you see the Pakistan army has internal dissent. And the external dissent of in the country, जो बाहर का जो problems हैं, it will reflect अंदरूनी problems में within Pakistan army. After all, people जो लोग हैं जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर हैं, वो बाहर से ही आते हैं. And they get all the issues बाहर से into this thing. और जिस तरीके से ये असीम मुनीर, the way he's trying to control, ये जो कंट्रोल पाना चाहता है on politics या अपने आप अंदरूनी thing on the army also, I get the feeling, ये हमने पहले भी बात किया था कि एक महीने पहले या at the beginning of this month ये काफी कंट्रोल में था. अभी उसका कंट्रोल उतना नहीं दिख रहा है मेरे को, एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट कंट्रोल ऑफ द होल सिचुएशन. एक और दूसरा, इसकी वजह से a little paranoid way of doing things is coming out. So what do you think will be the effect? And the army is definitely इसके बाद थोड़ा weak हो जाएगा. I'm not saying weak politically, I'm not saying weak militarily, but I think overall there will be a weakness in the Pakistan army. I would like your views on this. इसके बारे में अगर आप बता सकते हैं तो अच्छा होगा. जैसे आपने कहा, रिपोर्ट्स इसकी तो आ रही हैं, नॉट पब्लिश्ड रिपोर्ट्स, यू आर गेटिंग देम फ्रॉम सोर्सेज हियर एंड देयर, कि इंटरनल बहुत कोशिशें की जा रही हैं, मैनिपुलेशन विद इन सीनियर ऑफिसर्स हु वर कंसिडर्ड परहैप्स ज्यादा लॉयल नहीं हैं. अगर फॉर सर्टन पर्सनालिटीज, आसिम मुनीर साहब के साथ, जन साहब के साथ ज्यादा उनका लगाव नहीं है, एक्सेट्रा, उनको अलग कर दें. जैसे जो C4 कोर के को देख रहे हैं, शायद वो एक उनमें से एक पर्सनालिटी हैं. और भी इस तरह से हैं, और एमएस ब्रांच को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं टू आइडेंटिफाई पीपल, खास तौर पे जो ब्रिगेडियर लेवल से कम जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको ओवर द नेक्स्ट 6-8 मंथ्स कैसे डिस्प्लेस करके अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाए, ताकि कोई भी नो वन बिकम्स अ प्रॉक्सी ऑफ समवन सिटिंग इन आर्मी हेडक्वार्टर्स. ये सब जगहें बड़ी पावरफुल जगहें होती हैं. आपको मालूम है, आपको मुझे मालूम है कि मिलिट्री सेक्रेटरीज ब्रांच बड़ी एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट, ऐसी चीजें. तो इन जगहों पर जो जो बैठे हुए हैं, मैं समझ रहा हूं धीरे धीरे उनको ईज आउट कर दिया जाएगा यहां से. दैट इटसेल्फ विल टेल ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर कोई फौज, वेल एस्टैब्लिश्ड फौज, जिसके अंदर एक सिस्टम ऑफ प्लेसमेंट्स, पोस्टिंग्स एक्सेट्रा, टर्नओवर्स है, और इसको एकदम से आकर और 3-4-6 महीने के अंदर पूरे सिस्टम को ओवरटर्न कर दो, तो क्या तहलका मचेगा अंदर. इट विल क्रिएट अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इम्बैलेंस. एंड वन ऑफ द थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर, हर फौज जो है वो एतबार के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर चलती है. आई हैव टू गिव एन ऑर्डर, आई मस्ट बी वेरी श्योर कि मेरा हुक्म जो है उसकी तामील नहीं होगी, वो जो है इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन लेटर एंड स्पिरिट. वो नहीं होगा, ऐसी हालत में वो नहीं होगा. एंड द पाकिस्तान आर्मी इज नोन टू बी अ प्रोफेशनल आर्मी, और इसकी स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसिप्लिन हैव बीन ऑलवेज बीन फेयरली रिनाउंड. मगर अब जो है ये सब जब डेंट हो जाएगा, इसका असर ग्राउंड के ऊपर फील होने लगेगा. एंड we are also aware of this fact. I'm sure you and I are both aware of it. We have been on the line of control so often. We have seen that the state of discipline of the Pakistan army on the line of control is nothing great to write home about, right? अगर ये standards जो है और गिर गए, तो फिर there will be a lot of effect not only on his military capability, but overall अगर आप देखें, because after all फौजें जो हैं वो किसी इथॉस, किसी स्पिरिट के ऊपर चलती हैं. स्पिरिट कोर जो होती है वो होती है, उसी के अंदर जो है दरारें पड़ने लगे, बाधाएं आने लगे इस तरह से, तो दे विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू बी इफेक्टिव. नॉट दैट पाकिस्तान आर्मी इज गोइंग टू वॉर टुमारो, बट द सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज सच, इट्स नॉट दैट India is about to
suddenly, get onto the line of control and trying to cross it and things like that. Kal message bhi aaya hai Asim Munir साहब का to be warning India to be careful, but not realizing that India is far too busy internally with elections at the moment and also on nation building. हम अपनी 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की तरफ देख रहे हैं, हाउ टू मेक आवरसेल्फ इकोनॉमिकली रेजिलिएंट, बिकॉज it's very clear an economically resilient nation is the nation which progresses, which unites together. और वो सब एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त. तो टू समराइज इट, दिस impending disunity जो दिख रही है, जो एविडेंट हो रही है, it will it doesn't come, ये एकदम से उभरती नहीं है एकदम से. It will come slowly up. One fine day a trigger will set fire to this institution, and that will be it'll be the day. But after that, it'll be very difficult to recapture the ethos, the discipline, and the structure, the manner in which it is built on trust, etc. It'll be very difficult recapturing it. Yeah, I think, sir, आपने बहुत अहम बात बोला है. Actually, the thing which I was actually waiting for is one fine day phenomenon. एक दिन वो ट्रिगर दबाया जाएगा, अपने आप कॉक हो गया. Actually, the Pakistani army is like a gun which is already cocked. सिर्फ ट्रिगर दबाने की बात है. और जिस दिन ये होगा, Pakistan will have a lot of problems, because we all know the Pakistani army is the biggest political actor in Pakistan. It is the system which stands above every other system. तो जब पाकिस्तान आर्मी लड़खड़ आएगा और कुछ internal trigger will start the major descent, then Pakistan is at risk. Whether it will implode or not, whether the army will rise or not, is to be seen. But I think जो आपने बोला है very important है कि ये this will continue and we have to keep track of this because it has implications for all of us. The second point I'll take, आपने जो बोला है on the external issues, and then later we'll come back to the internal issues. The point about Pakistan and US relationship, which will not break, they'll always come back, because Pakistan is too important a player for US to completely ignore over a period of time. ये बिल्कुल सही है. दूसरी ओर China. So China also will not give up on Pakistan. अगर आप देखेंगे तो Pakistan depends on China maximum for its arms. हथियार तो वहां से आते हैं, और maximum funding like IMF या World Bank के जरिए जाना है तो the funding is from the West. और इसके अलावा Pakistan is also dilly-dallying with Iran, Russia and China to have an access in the North Arabian Sea, क्योंकि इनके exercises have improved in this area, naval exercises and air force exercises वगैरह वगैरह वगैरह. तो इसको देखते हुए, don't you think Pakistan will become a battleground state? A weak Pakistan will become a battleground state for influence between China and Pakistan. And in that, where do you see India playing its role? No doubt that the state is weak, and particularly a state which is so strategically located, geostrategically located. मैं कभी हिचकिचाता नहीं हूं कहने में कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है, ज्योग्राफिकल स्पेस जो है, perhaps is the most strategic geographical space anywhere in the world. ठीक है, it's a confluence of civilizations, it's a confluence of different routes, east, west, north, south routes from all over the world which come into this area. Interests of every part. For example, you can't make an access into heart of Asia without going through Pakistan. Heart of Asia से आप निकल के अगर warm waters में आना चाहते हैं तब भी नहीं आ सकते. ईरान वहां पर एक पराया देश है इस वक्त, तो इस वक्त सबके अटेंशन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर होती है, क्योंकि उसी के जरिए जो है एक्सेस मिलता है. सेंट्रल एशिया के अंदर बड़ा अहमियत का इलाका है. कोई नहीं भूल सकता कि सेंट्रल एशिया वही इलाका है जहां पर ओल्ड ग्रेट गेम खेली गई थी, जो Russian Empire, Soviet Empire ने खेली थी, to retain its influence over that region and try and push down towards the warm waters and towards the very famous
the golden duck that was India as a part of the British Empire in those days. Yes, everyone understands the importance of this particular region. और इसके अंदर अगर स्टेबिलिटी हो, सेंट्रल एशिया स्टेबल हो, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान स्टेबल हो, so then this region can be exploited for its resources, tremendous resources in Afghanistan, mineral resources in Afghanistan, tremendous amount of gas in Turkmenistan, oil, etc. in the Caspian. यहाँ का तो there's a tremendous scope for it. Then east-west routes जो है, आपकी connectivity जो है यहाँ से, civilizational connect जो है, all this can be exploited if it is stable. But stability is the one thing which is escaping this area. And the heart of that problem of instability, earlier we thought was Afghanistan. But Afghanistan today is not as unstable as we see as the way Pakistan is. You see, after all, Iran to tab bhi ek governance ke niche, whatever be the ideology, etc., it has remained stable. It doesn't matter which side it is aligned to. Central Asia, to an extent, weaker governments, etc., still remain stable. Afghanistan has stabilized. But Pakistan is this crucial area, 240 million people, a huge population of people. And other 240 million people, well-to-do, educated, literally mobile as far as their capabilities is concerned, etc. वो सब है तो फिर तो बड़ी advantage है. मगर it's the heartland of ideological problems, radicalism, poverty, feudalism, weak economy, dominant army, every negativity you can think of वो यहाँ पर इस एरिया में है इस वक्त. और उसकी वजह से जो मैं हर दफे आपके पहले के प्रोग्राम्स में मैं बताया है मैंने काफी दफे कि मुझे तो अंदेशा लग रहा है कि एक नई वेव जो है ग्लोबल टेरर की दोबारा शुरू हो रही है. शायद अफगानिस्तान से हो, चाहे सेंट्रल एशिया से हो, चाहे उस पार पर्शियन गल्फ के उस पार से हो, मगर द इन्फ्लुएंस, द फैनिंग ऑफ these ideas and thoughts is already started and is taking place. हमने देखा पहले 10 साल पहले किस तरह से आइसिस बनी थी, उससे 20 साल पहले हमने देखा कैसे अलकायदा बना था. इस तरीके से कोई और ना कोई हस्ती इस तरह से निकल आए यहाँ पर जो once again holds the world to ransom for the next 10 years or 15 years or so. जैसे अलकायदा ने 20 साल तक और तकरीबन आइसिस ने 10 साल तक पूरी और 5 से 8 साल तक दुनिया को अपने कब्जे में वर्चुअली held them hostage virtually. तो इस तरह की स्थिति ना आ जाए. अब इसमें भारत की तरफ हमारा रोल क्या है? In the sense we border this region, this very crucial region, and अगर किसी का intent है to spread the whole idea of radicalism, etc., India itself is a target of that. So then people may wish to try and bring all that cross through this entire region, come into the area of northern India, etc., and try and spread it beyond. This has been a civilizational kind of a thing of the radicals for very long. The intent for very long. India has to be politically stable, militarily very strong, because with its growing capability, it will be the target of lots of different nations in this region who will not want to see you grow like this, right? We are seeking stability. We want our border stable. We want our region stable. We want internal stability. इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कहीं ना कहीं से की जाएगी. And that is something we have to be very careful. Pakistan, because of its instability, will always remain susceptible to be exploited, to do what it may not want to do also, but perhaps will be forced to do it at the behest of external powers who do not want to see India in its rightful rate of growth, the rightful place in the committee of nations around the world, will not want to see India in that position. So I suspect that more and more that Pakistan gets unstable, it is directly affecting us. Yep. Our stability and our growth will depend on how stable does this western portion of the region
from our borders with Pakistan to right till the Red Sea. How stable does this region remain? आई थिंक सर आपने एक बहुत नया सोच और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज आज आपने बताया. मेरे ख्याल में दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस एज इंडिया. एंड मैं आई जस्ट पुट इट, जो आपने बताया एक अलग तरीके से बताऊंगा मैं. हिस्टोरिक, आई पुट इट इन द हिस्टोरिक फ्रेमवर्क. अगर आपको याद है तो व्हेन जियाउल हक वाज द president and he was a martial law administrator in पाकिस्तान. पाकिस्तान का इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं था, पर जब अफगानिस्तान का वॉर के लिए ही स्टार्टेड दिस होल स्टोरी ऑफ मुजाहिदीन. और मुजाहिदीन ट्रेन हुए कहाँ? अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर. और दैट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज नॉट गॉन अवे. एंड दैट होल जो टेरर apparatus he has created, and the fundamental of the terror apparatus is not in the training camps वगैरह वगैरह, वो तो मोबाइल है, is in the ideology which emanates along that area. So that is intact still. And one. Number two is the time when Musharraf again used that same thing to create Taliban and push them into Afghanistan. In fact, Taliban was created much before. But he used and he gave shelter to Taliban in this entire area. तो हिस्ट्री बताता है हमें, जब भी पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक हो जाता है, people come from outside and they nest in Pakistan. Pakistan is the nest in which when people ideology is, अभी जैसे Houthis हुए या Hamas हुआ, Hezbollah हुआ, the extremists of that area, when they're driven out from that area, will come and nest themselves in Pakistan. And when that happens, and that might well trigger the third revival of Pakistan. It might, we don't know, we don't see how this, the economic contours of that revival are yet to be seen, but that is something we need to watch. जैसे आपने बताया, there are a lot of countries who might fund this revival of Pakistan through terror and the apparatus which is there to see that India doesn't grow the way it is growing. So I think that's a new construct which I would like all viewers to understand, which has come out today. I would like to add one word to it only. I would just remind our viewers कि इस सोच में ना रहे कि इस तरह की स्थिति में there are permanent friends and relationships. ये बड़ा dynamic environment होता है और इसमें these are moving relationships from time to time. You can rarely depend on any single partner or a single nation or a single alliance. This can change overnight at any time. Yeah. So we are at risk. The more unstable Pakistan is, the risk for us is more. And that risk can be offset, like you said, only by having a stable polity, internal strength, which is supported by a strong military. And this is a major message that I think everyone has to take home on this issue. So from this external issues which we have spoken of, let me get back to within Pakistan. Right? Now, history has said that no government lasts for more than 3 years in Pakistan. That's the ultimate thing. And now with a guy like Asif Ali Zardari, who's going to become the president, he's a shrewd chap. And as per many reports and many articles which have come out, he's taken over the presidency very smartly. Like आपने पहले बताया, he is making space and he's looking at the future. So he will allow half the government of Pakistan, or a double driver vehicle. The other half will be in the hands of Nawaz Sharif, and both are looking at the future. Right. While this is happening, right, and the army is fighting its internal issues, do you think this government will be able to achieve anything meaningful, or will just aid the descent of Pakistan into chaos further? See, for any government, first of all, there's nothing wrong with the government. I mean, after all, the politicians in Pakistan are just like politicians in India. Overall, India has had the capability to deliver good, strong bureaucracy, a non-interfering military, right?
a set of professionals, good corporate sector, set of professionals all over. All this is lacking in Pakistan. So that means all the agencies, all the factors which drive a nation towards progress, to come out of the morass into which a nation sinks in a situation like this, none of those things are available today in Pakistan. तो मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है. You see, अब आप देखें, frankly saying, both these parties are non-radical parties, PPP and PMLN. मगर कल अगर कोई सिचुएशन आ गई जिस तरह से, इफ यू रिमेंबर, इमरान खान गवर्नमेंट के साथ जो आतिफ मियां का केस आया था, in which case we had brought Atif Mia from the World Bank and brought him to Pakistan to be an economic advisor to the government of India, the government of Pakistan, chief economic advisor, etc. और 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते में उनको हटा दिया under pressure of the radicals के ये तो कादियानी. No, if that is the attitude which will persist in Pakistan, I have no hopes. I have no hopes. These parties will have to rise above all this. And you see, this whole intention of trying to extricate themselves from that terrible mess of radical ideology, they have to succeed in doing it. Will they be able to do it? I have my doubts. I have my doubts, because the more that they succeed, the more each of the constituents of this coalition will want to take a piece of the cake. And that is what will lead to this fact that 5 साल तो ये सरकार चलेगी नहीं. So Pakistan will retain its record. They are very good in records. They will retain the record of making sure कि 5 साल ना चले किसी ना किसी तरह. 3 साल चले, 3.5 साल चले, 5 साल ना चले इनकी सरकार. और जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक until you have that dynamic ability to be able to be dynamic enough to retain something for a period of time, a process, a set of policies, etc., they can't hope to be able to get out of this. So I have my doubts at the moment, although I am hopeful. I'll be glad to see Pakistan rise from this, for the simple reason we don't want something on our borders. We don't want a nation on the other side which is in such a sorry plight that we have to be concerned at all times about our security. जो हमने discuss किया था अभी थोड़ी देर पहले, yes. The concern about that, because a stability in the region is most important for India to rise. हमारे बड़े noble aspirations हैं. We want to see ourselves the rise to 10 and beyond $1 trillion economy. वो सब नहीं आ सकता अगर इस तरह की instability यहाँ पर होगी और हमको हर वक्त अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर देखना पड़ेगा. और ये उधर नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर चीन जो है वो हावी होने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर हम बड़ी मुश्किल से हमने अपने आप को पाकिस्तान के उससे निकाला है, और ऑब्सेशन विद पाकिस्तान. और अब दोबारा अगर वो ऑब्सेशन चला गया पाकिस्तान की तरफ, तो इट विल बी अ सॉरी स्टेट वेयर looking at only border security at all times, the nation can't look at its internal resilience in that case. So I am hopeful कि कुछ ना कुछ तो होगा. Magar, a lot will depend on the policies that their main sponsors from across the world also follow. Saudi Arabia किस तरह से देखेगा पाकिस्तान को, the United States किस तरह से देखेगा पाकिस्तान को, चीन किस तरह से देखेगा. चीन तो हर वक्त सपोर्ट करने के लिए, मॉरली सपोर्ट करने के लिए तैयार है, मगर जब it's a question of opening up their coffers, तब जरा हिचकिचाते हैं in that case. So I have my doubts that this government is going to last long enough to see Pakistan stable and on the move towards better, times in their future. Right, sir. Yeah, I think you have painted it very well, but I'll take you into 2 more aspects and then we'll take questions. The first thing, मेरा ये मानना है कि Pakistan has 3 fronts always. What are these fronts? एक front है the Western front, traditional Eastern front against India. The Western front comprises Afghanistan or Iran का combination. There's a third front, and this third front has 2 sub-fronts. And this is something which, this is my view. The third front was internal, and that was the CPEC. When the CPEC came,
I was always of the view that it will be subjected to some problem of terror. There's a vulnerability in the CPC and there's an economic liability of the CPC, which will make Pakistan internalize and focus on that front. Right. इसका दूसरा भाग ये है कि पानी का किल्लत पाकिस्तान में बहुत है क्योंकि इंडस एकमात्र रिवर है जो पाकिस्तान में पानी देता है और आजकल पानी का इनका इंडस का पानी कराची तक नहीं पहुंचता है और इन्हीं का लेक है इनफैक्ट आधा घंटा पहले मैंने इसके ऊपर एक एनालिसिस किया और मैंने एक पत्रकार को दिया कि भाई ये पब्लिश करो इनका पानी इज द बिगेस्ट वेयरवुल्फ ऑफ पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज स्लिपिंग इट इज अ फैक्ट विच हैज नॉट कम आउट एनीवेयर नॉट एनीवेयर इन पब्लिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बट उन सबको पता है they are going into a state of absolute water scarcity. तो ये दोनों चीज will also add to the instability of Pakistan. क्योंकि CPC के ऊपर जितना कर्ज है 60% of Pakistan's external debt is China and CPC is non-performing, right? And ये जो पानी का किल्लत है that is also going to be a major problem क्योंकि 40% of people depend on agriculture which depends entirely on water. तो इसके बारे में आपका क्या विचार है and how do you think this will further destabilize Pakistan? There is no doubt about it. I have no point of reference on this at all, and I would reinforce it by only quoting from Mr. Tilak Devasher, my distinguished fellow from the Vivekananda International Foundation, जिन्होंने अपनी किताब में पहली किताब में भी लिखा था वाटर इकोनॉमी एजुकेशन पावर वीप उन्होंने कहा था These are the four major issues of concern as far as Pakistan is concerned. And all those who think that security is about borders, let me re-educate them and say security is all about these four things. ये चार चीजें किसी देश की ताकतवर हो तो आपको फिर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं आपके बॉर्डर कमजोर हो सकते हैं कोई आपके खिलाफ नहीं कर सकता कुछ योर इकोनॉमी इज स्ट्रांग यू हैव इनफ वाटर आपके एग्रीकल्चर जो है रेजिलिएंट है पावर आपके पास है ताकि आपकी इंडस्ट्री चल सकती है और एजुकेशन चल रहा है आपको टेक्निकल एजुकेशन इफ यू गो बैक टू 1978 द फोर मॉडर्नाइजेशंस ऑफ डेंग जियाओपिंग तो यही चीजें थी उसमें एग्रीकल्चर टेक्निकल एजुकेशन इफ यू रिमेंबर राइट इंडस्ट्री and armed forces. Four modernizations. None of these things, Pakistan can that none of these things are there. Why armed forces are nowhere near modernization because they don't have the means for it. And other three things they haven't invested in and they don't seem to have any intent of investing in this. तो ये इस तरह की इंस्टेबिलिटी जो है वो चलती रहेगी और आपने जो सही कहा बिल्कुल तीन ये मैं बहुत सालों से कोट कर रहा हूं कहता जा रहा हूं उनका एक है वेस्टर्न फ्रंट जो अफगानिस्तान ईरान को देखता है ज्यादातर अफगानिस्तान को दूसरा है कश्मीर फ्रंट दिस साइड ईस्ट एंड तीसरा मैं मेरे तरफ से सीपीसी इज डेफिनेटली अ सबसेट ऑफ इट बट द ओवरऑल इंटरनल सिक्योरिटी द इंटरनल और ये तीन चीजें एक साथ देखना बड़ा मुश्किल है सो इनका फोकस होता है कि कभी ये अफगानिस्तान देखते हैं कभी कश्मीर देखते हैं कभी इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं जब ज़रबे अज़ चल रहा था तो दे वर ऑल टोटली हंग अप on internal security. ठीक है जैसी बुरहान वानी का इंसिडेंट हुआ था दे ऑल गॉट फोकस्ड इमीडिएटली ऑन कश्मीर ठीक है इस तरह से ये डायनेमिक तरीके से इनकी जो इनका फोकस जो है वो बदलता रहता है इस तरीके से and that is how actually these are the main challenges that Pakistan faces as far as this security is concerned but it can't manage if all three things happen together it becomes very difficult for Pakistan to manage it. So आपने बहुत अच्छा बताया सर if all three things happen together it will become very difficult for Pakistan so therein lies our way forward you should let Pakistan be alone and not put any pressure on them so that whatever happens at least at one end you help them out to struggle on their own it is not right the last point which I want to make कि जब whenever Pakistan has had internal problems and whenever Pakistan has looked internally, which it has for the past पिछले 2-4 साल से, it has not had time to look out, especially after the Article 370 was scrapped and all that. इनके पास कोई टाइम नहीं रहा because ये अंदरूनी इश्यूओं में फंसे रहे
And that is the time we have got this opportunity to make ourselves grow. And we have grown and we have made use of that. So, but like you said, if the situation becomes worse and Pakistan becomes a nesting place for outside influences to come and restart the entire terror problem, then it will become a issue for us. So where do you think that cutoff will come between these two, and what are the indications we should watch out for? Because definitely we would like a Pakistan which is internalizing. As far as it internalizes and it continues, we have no problem. But जब बाहर के influences आने वहाँ शुरू होंगे, तो we have an issue and we have to start reacting. So how do Absolutely. you see that happening? Absolutely correct. I don't see this happening immediately, but I see this happening Naturally. in the midterm to slightly long term. क्योंकि जो मैंने डिस्क्रिप्शन किया था ग्लोबल द साइकिल ऑफ सेकंड साइकिल ऑफ ग्लोबल टेरर का, वो भी मैं आई एम नॉट लुकिंग एट इट इन द इमीडिएट फ्यूचर. इट विल टेक टाइम. It will take time. To develop. What I would be concerned about in terms of indicators is the degree of connivance between the Afghan Taliban and internal elements within Pakistan. You see, at the moment, we are seeing the ISI not on very friendly terms with the Afghan Taliban, and this situation is likely to continue for some time. That's why it's good, in many ways, it is very good for us if this kind of a situation continues on the Western Front, the problems with the Durand Line, the Tehreek-e-Taliban Pakistan being sponsored by the Afghan Taliban and continuing to rule the roost in many of the areas of Khyber Pakhtunkhwa and places like that. This is all, to my mind, good for us in many Very ways. good. It should not cross a threshold. It should not cross a threshold. The moment it crosses a threshold and you find greater connivance between the internal machinery of Pakistan and subversion from the Taliban side into elements within Pakistan, that will start spelling a bit of not a bit of it, a fairly strong threat against us. Because I am convinced that a lot of elements, unidentified, unseen elements in Afghanistan and that region, are looking at the larger Khilafat, the Caliphate, to be extended into this Khorasan, including portions of India, etc., into this whole area. And they want to rule the roost. They don't want the Pakistan Army or the Pakistan ISI or someone else to do it. They want to rule the roost. And they want to do it perhaps in conjunction with whatever elements that they can convert in Pakistan. The polity, the religious scholars, the youth, any one of them, right? It will take time because Pakistan has succeeded to some extent to erode this to an extent, not completely, but to some extent. It will take time to rebuild this whole thing. It's not that easy kind of a way by which during Ziaul Haq's time, the manner in which this conversion took place, that is no longer available inside Pakistan because people have realized it. The Pakistan Army has realized it to a great extent. There's huge amount of resistance within the Pakistan Army against radicalism. So all these aspects are there in the melting pot working against it. So we have to be careful of this particular situation. I don't think the Pakistan Army, if they are sensible, I don't think they will want to see the ceasefire going up in flames. It is helping them tremendously. It's helping us. Let's be very frank. I'm happy as a former corps commander there to see Kashmir. The line of control is well under, is stable at the moment. No firing, no exchange, etc. Unnecessary interruptions here and there are not necessary. We can put our attention to far more important things internally in India. Similar thing for Pakistan. I think they have also realized that keeping the LC alive is counterproductive for them. But what we have to be concerned about is, I don't think the ISI, Pakistan Army, anyone will want to see a complete wastage of the investment of 30 years in Kashmir. They will not want to see that going waste completely. So therefore, an attempt to remain relevant will continue. How that manifests itself is for us to assess. How will it manifest itself? Some of these things which have happened in the Rajauris Poonch sector at the moment is one. एक पहलू है उसका ये. उसका एक पहलू है. There will be many such ways of doing it.
It may once again extend into the valley. In the valley, in certain portions of the valley, maybe South Kashmir, not so much in North Kashmir. It attempts to try and see some more infiltration inside without raising the ante as far as the situation in Kashmir is concerned. These things will continue. So from time to time, you are going to find operations, incidents, casualties, this, that. How will we respond to it from a public angle, from a public handling angle, from a political angle? This will be something very, very challenging for us. I completely agree with you, sir. But the last point I want to make, how will we respond? I think we are already seeing part of the response as a anticipatory action with our outreach into Middle East politically, खास करके UAE और Saudi Arabia का साथ. And we also have linkages with Iran, right? They're not gone away. I think we are doing that in the right direction. I would like you to give a comment because that's where the ideology is going to come. And if you have a political hold over that region, that ideology can be handled there. Your views, and then I'll take questions. Very good. You see, this is something which the current government's whole strategy, instead of sort of putting emphasis on Europe or Southeast Asia is a very important nation. Now, but we have, or the government of India has spread its wings to touch different regions of the world. But the manner in which the diplomacy has played out with the Middle East, with the Islamic world, OIC in particular of this entire area, has been remarkable. And I think a tremendous amount of investment has been done by Mr. Modi into this, right from the beginning. In fact, this was one of the first areas he visited. And 7 visits to the UAE, going to the Palestinian Authority, going to Iran, inviting the Iranian president here, going to Jordan, inviting the king of Jordan here. I mean, this has been a give and take which has been going on all this time. I think we are fairly well embedded as a people among the people of West Asia. And I think the best part of it is we haven't come as someone to try and exploit what is available in these countries. We have come there essentially as partners. These are great partnerships which are happening between these countries with India. And we realize this $48 billion of remittances which come in here, 8-9 million people who are there. This is a huge asset which is working not so much on the economic angle as it's working on the strategic, the geopolitical and the geostrategic angle. So I think this is something in which the government of India will have to remain invested. There should be no change anywhere. The same kind of energy which has gone into this must continue in the future. I think we have really, आज जो ना पाकिस्तान के विभिन्न पन्नों को एक पन्ने को देख लिया हमने. And आज के जो चर्चा है, we have gone beyond the normal thinkings. And what is at stake for India in the future of Pakistan, we have brought out. And the stake is that our own stability and rise should not be affected. And that depends on at what level Pakistan's instability descends into, or iska threshold ke upar, monitoring the threshold is very important. So I'll take a few questions with your permission. Absolutely. Yeah. Now the first question is, he's got a nice name, so I took it, Jack in and out of the box. Ask if Sharif as PM wants to open trade, shouldn't India control it through strict export licensing to stop exports in case of terrorist attack, misbehavior? देखिए, जहां तक सवाल आपका बहुत अच्छा है. There's no doubt about it. Trade जो है ये anywhere in the world, as long as it's equal, not an unequal trade, it always benefits people. Right? आपकी manufacturing बढ़ेगी, आपका turnover बढ़ेगा, everything. But as I said, unequal नहीं होना चाहिए. Secondly, the problem here is there are far too many mavericks within Pakistan to allow this to continue. शुरुआत, हर चीज की शुरुआत तो पाकिस्तान के साथ हो जाती है, उसको कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल होता है. So I think
from a initiation angle, the government of India will be only too happy, but they must remember it that there is no point starting something which is going to end in 7 days, as you found with what happened in 2015 when Prime Minister Modi made a gesture of friendship, going to Lahore, out of the way, coming back from Kabul, changing his itinerary, spending a little time there. In 7 days, you found the return gift to us in the form of the Pathankot attack. तो उस तरह की चीज को कोई फायदा नहीं है. मैं समझता हूं कि जब तक के थोड़ा कम्युनिकेशन और बनेगा बिटवीन द टू कंट्रीज, अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, थोड़ा ट्रस्ट और होगा, उस सरकार में, हमारी सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस सरकार को वहां पर व्हाट इज देयर कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग एबल टू राइट थ्रू दिस, कैन दे डू इट? जब तक वो एश्योरेंस है हमारे पास, then we can go ahead with and engage Pakistan economically. But I don't think that that stage has come at the moment, and it's not coming in the near future. All right, sir. The next question is about MQM. General Atta sir, MQM in Karachi seats went up from 4 to 18 this time. Question, is it a re-emergence of Muhajirs politically in Karachi and thus in center? Also, Arif Alvi, a Muhajir, what's his future? I mean, I wouldn't, it's okay whether his future, what he happens to him. But I think the larger question is, will this happen, re-emergence of Muhajirs? Because they're also a breed which is going away with this last generation. देखिए, जहां तक कराची है, कराची is the city of Muhajirs, there's no doubt. But over a period of time, it's become a metamorphosis of different cultures. अफगान बहुत आ गए अंदर, बलूच आ गए वहां पर, पठान बहुत हैं, etc. But obviously, it is showing a resurgence of Muhajir controls within Karachi, right? That seems becoming very evident. 17 to 18 कितने 18 seats हुई हैं, मैं समझ रहा था 17 सीट हैं approximately that they have got, and they are virtually kingmakers. You can say by joining the government, they have actually added their weight to it. But इसको exploit करना politically beyond this, जब तक लीडरशिप ना हो, मैं नहीं समझता हूं कि ये आसानी से हो सकती है. अल्ताफ हुसैन साहब तो जैसे है ना, लंदन से बैठ के कंट्रोल करना एंड प्रॉक्सी से चलाना, इस तरह की चीजें ये नहीं हो पाती हैं. यू नीड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप. द एडवांटेज व्हिच द पीएमएल हैज बीन नवाज शरीफ. नवाज शरीफ वाज अ सर्वाइवर. आप देख लीजिए, हर सिचुएशन में वो सर्वाइव करके फिर वापस आ जाते हैं इस तरह से. सो that kind of a leadership is required. In this case also, he's building up his next generation. Shahbaz could, of course, not next generation, but Shahbaz is there, part of the family. Maryam को वो build up कर रहे हैं इस तरह से. तो मुझे तो मुश्किल लगता है मुहाजिर्स का, even under the current circumstances. Numbers is not everything to my mind. Numbers are an indicator of influence, etc. But जब तक वो influence जो है एक काबिल leadership के अंदर ना manifest हो, तब तक इसको, इस तरह की चीज को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. Thank you, sir. The next question, could only true Muslims of surrounding country inside correct Pakistan's hypocrisy? Without that, for India, it's not possible. I think we've done it in some manner, but I would like you to elaborate it, sir. Really, I mean, the सवाल ज़्यादा clear नहीं है कि could only true Muslims of the surrounding country. I think so. We leave the true Muslims part out, but I think what you said, the outreach towards to the Islamic world, everything has a corrective thing on Pakistan. So I think if that is the line, I think we need to probably he's not explained. Of course, there's a degree of vagueness in the manner in which the question has been put together. But Pakistan के लिए no doubt outreach to the Islamic world, ये याद रखना चाहिए आपको कि पाकिस्तान जब बना था, इनका aspiration तो ये था that they would be the leaders of the Islamic world. ये एक नया देश बना है, पहली दफे एक इस्लामिक देश बना है, purely for out of Islam they have come out as a nation, etc. But they belied that kind of a thing which was expected of them at that particular time. तो इसलिए leadership नहीं वो काम कर पाए. और leadership इस तरह की चीज में by having nuclear power or other nuclear weapons in your hands, that does not come automatically. Even being militarily a very strong part doesn't really come to.
जब तक आप इकोनॉमिकली नहीं स्ट्रांग होंगे। और वो एक बहुत बड़ी फेलिंग हुई है इन द केस ऑफ पाकिस्तान। एंड डिस्पाइट देयर being a part of OIC, their outreach to the Islamic world, etc., the give and take in terms of economics has been highly questionable. And no one wants to come and give you free lunches. याद रख लीजिए, रिलीजन के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर आकर आपको कोई फ्री लंच नहीं देगा। Saudi Arabia has been, I would say, very, very liberal in their parting of funds. The UAE has been very liberal on this. But there is a point up to which this can be taken. And Pakistan will have to definitely show better indicators overall, internal resilience indicators, the capability to stand on its own feet, etc., to be able to garner more attraction from the Islamic world itself. Yeah, I think so. I just want to add, sir, ये जो इनका जो प्राइम मिनिस्टर था, that stand-in prime minister Kakar, he had gone to Kuwait recently. He wanted money for the Diamar Basha Dam, which Kuwait said, हाँ हम देंगे वगैरह वगैरह के छोड़ दिया उसको. And आगे मामला बढ़ा नहीं. Even the Chinese have stopped funding for that dam. So that thing, and all these things will make Pakistan internalize and think why the whole thing is there, and they need self-correction. And hopefully this government will do. Whether they do it or not is a thing. So this next question is obviously from Pakistan, and he's got two parts. We'll take both together. The persecution of Pakistan's Ahmadi community is often overlooked. The very people who coined the term Pakistan now face severe persecution in Pakistan. And then he says, why did the Indian government choose to remain silent on the persecution of various communities in Pakistan post 1971? No concrete actions were observed thereafter. देखिए, पाकिस्तान के अंदर टू एक्सपेक्ट, कादियानी तो भूलिए, शिया कहां तक टॉलरेट होता है टुडे। कट्टरपंथी की तो वो हद हो गई है पाकिस्तान के अंदर। एवर सिंस 1977-78 जब से ये अपनाया था उन्होंने कट्टरपंथी और रेडिकलिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ, तब से 2 generations have gone past. And if you have seen this very famous Pakistani film called खुदा के लिए, you will understand it even better. So I don't foresee, and India is a country which does not sort of interfere in the affairs of another nation in that manner. हमने, by and large, we have got a large Indian Muslim community, but even the Indian Muslim community has not shown any kind of a distinct towards the Pakistani Muslim community there, or anything again in favor of the Qadianis or something, because they're non-interfering politically. That's been a policy from India, non-interfering politically. And हमारे यहाँ अपने यहाँ Qadiani, in the sense we have a Ahmadiyya community within India. I'm in touch with lots of them. I'm a regular invited to many of their conventions and many of their meetings in Delhi. I go there regularly and even address them, right? Magar, I don't think it should be expected from India. Yes, when it came to non-Muslims within Pakistan, India expressed its reservations, it expressed its concerns in many very strong ways about it. But on the aspects of Islam itself, except for making an odd statement once in a while, empathizing with the people internally, India has not sort of shown that propensity to go out, outreach karke, unke saath support karke. We don't want to be seen like that. As I told you, we are a nation which is quite content with what we have inside the nation, and we are quite content in progressing that, particularly on the economic side, right? Ideologically, we would not like to get stuck in these kind of things. अब आप देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर परसों ही there has been an incident of so-called blasphemy. A woman who was wearing a chaddar with some Urdu or Farsi printing on it was alleged to be carrying out blasphemy, because people suspected that these were verses from the Quran which were published on this shawl, on this chaddar, on the dress. And she was बड़ी मुश्किल से उसको बचा के, one policewoman, brave Pakistani policewoman,
brought her out. Otherwise, she would have been lynched probably virtually out there. So this has become like a way of life inside Pakistan. इसी को तो धीरे 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 जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उनको कोशिश करनी चाहिए इसके, but they themselves perhaps feel very hamstrung in doing it because they know that there is a certain political groundswell. और ये बड़ी अजीब बात है कि वो पॉलिटिकल ग्राउंडस्वेल तो है नीचे मगर डज नॉट मैनिफेस्ट इनटू वोट्स में नहीं आता वो, मगर जब स्ट्रीट एजिटेशन होते हैं और स्ट्रीट्स को कंट्रोल करने की बात आती है वो एलिमेंट वहां आ जाता है, वो ब्लास्फेमी के ऊपर वो आकर एजिटेट करने के लिए तैयार रहते हैं वहां पर. सो दिस इज वेरी वेरी awkward kind of a thing in which we from India we should not get stuck at all. Thank you, sir. The next question. So my question is if Pakistan would be more inclined towards USA or China? Pakistan has learned how to play both ways. Their interest lies both ways. You see, economically, they have no other option but to look at the United States because institutionally, जब तक IMF से इनको वो नहीं मिलेंगे और मिडिल ईस्ट से सऊदी अरेबिया, यूएई, इनके साथ अगर इनसे भी चाहिए आपको लोन्स चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो you must remember the emerging relationship with the United States with these nations, right? यूएई के साथ इतना स्ट्रॉन्ग संबंध है, अमेरिका के, सऊदी अरेबिया के साथ है. अगर वो रिलेशनशिप नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ अपॉन इट एट ऑल. साइमल्टेनियसली चाइना से इनको क्या मिलता है? हथियार मिलते हैं, राइट? कुछ हद तक पैसा मिलता है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स मिलते हैं यहाँ पर, एंड दे आर जो politically they are given a sort of competitive importance. So they become like a bone of contention with the United States and China. Both want to support them. Both realize the geostrategic importance of this space which is there. And Pakistan fully exploits that. It would be, I think Pakistan would be strategically going completely wrong if it sided with either side. It has learned how to straddle. It is straddling this wonderfully, both with China and the United States, and to a great extent with even Russia earlier. Now, to up to Ukraine ko ammunition बेचने के बाद, etc., their relationship with Russia isn't what it is, should be otherwise. But they were even playing this game with Russia at one time. Yeah. General HASNAIN, sir, you mentioned unstable Pakistan is a risk for India. What option India has to engage with Pakistan? Because creation of Pakistan itself, animosity with India. I agree with your last statement because creation of Pakistan itself is animosity with India. It should never have happened. And on our doorstep, a nation created, unstable nation created, which had to find its feet and which could not find its feet. Obviously, it spells a major threat and a danger to us. But this is an eternal debate in India. And lots of people actually have been going against what I have been writing, what I've been saying, etc. And I stuck to my guns. I've said, we are not looking at stabilizing Pakistan so that it becomes more stronger. No. We are looking at a Pakistan just about there. So that the instability does not become a risk to us. That is what we should be looking at. Our analyses, our strategic thinkers, our think tanks should all be focused on that. What is that aspect of Pakistan? The instability aspect of Pakistan, which will threaten us. What is that aspect of Pakistan which is good for us? Right? Obviously, what is good is a degree of, an internal situation inside Pakistan which does not produce what we have seen in Kashmir, proxies, support from the army to go in and out here, a degree of stability inside, economic stability is such that Pakistan recommences that entire proxy war in Jammu and Kashmir. No, we don't want that kind of a situation. We just want a situation to make sure, when I even mention this aspect of stability and instability, I always say, Pakistan को उतना stable होना चाहिए हमारे लिए ताकि the effect of that does not cause an impediment, any threat and an obstacle to India.
I'll take two more questions. This first, General Sir, like you stated, we shall be under attack constantly, trying to provoke us. How long will our respond to manage it? When shall we be proactive? When we see proactive response coming from our side or their side. I mean, he's talking of देखिए ये probably restraint. आई अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. देखिए ये बहुत भारत में आज दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन और बड़े हम सब इसमें लगे हैं कि कुछ हो रहा है हमारे खिलाफ और हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. 2 दफे हमने प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्स किया है और मतलब जब कुछ एक्शन हुआ है वहां से हमने सबक सिखाया है, मैसेज भेजा है. लॉट ऑफ पीपल वाज थिंकिंग दैट दैट इज एन एक्ट ऑफ डिटरेंस कि उनको डिटर करने के लिए नहीं, डिटर करने के लिए नहीं, वो मैसेजिंग थी. दोनों सर्जिकल स्ट्राइक्स भी, बालाकोट भी, बोथ स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग टू पाकिस्तान कि तुम करोगे, हम हमारे पास काबिलियत है, हम डिसीजन ले सकते हैं और हम रूबिकॉन को क्रॉस कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड. तब से अगर आप देखें तो इन कार्रवाइयों के ऊपर काफी पाबंदी लगी है. ठीक है, छुटपुट अटैक हुए हैं, 3 4 5 टेररिस्ट के अटैक हुए हैं. ऐसा कोई एक्शन कि आप इन्फिल्ट्रेशन करके डीप इनसाइड आकर श्रीनगर की असेंबली, स्टेट असेंबली के ऊपर आकर कुछ ब्लास्ट करें या ऐसी चीज करें या किसी बड़े आर्मी फॉर्मेशन के हेडक्वार्टर पे आकर करें, इस तरह की चीजें नहीं हुई हैं. ये उनको भी मालूम है कि ये जो है इट इज क्रॉसिंग द लिमिट, इज क्रॉसिंग दैट लाइन ऑफ टॉलरेंस. तो मेरे ख्याल से हमें अपनी टॉलरेंस लाइन को कायम रखना चाहिए एंड वी शुड कंटिन्यू टू बिल्ड आवरसेल्व्स अप stronger and stronger. Don't run the risk of getting yourself involved unnecessarily into a running war. के मतलब एक लड़ाई के अंदर, अगर नहीं तो आप हर 6 महीने पे लड़ाई ही लड़ते रहेंगे और आपको मालूम होना चाहिए कि एक लड़ाई लड़ने से आपकी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर होगा. आमतौर पे आप जनरल्स, सोल्जर्स सबसे पूछिए तो we are the last people who recommend war. Everyone else recommends it. ठीक है, हाँ, प्रोएक्टिवली हमें ये करना चाहिए, प्रोएक्टिवली हमें वो करना चाहिए. We are the last to say it because we know what is the cost of war. Cost of war is a killer for the nation. जो कुछ देश ने इतना उभरा है, देश इस तरह से प्रोग्रेस किया है पिछले 10-12 साल में, जिस तरह से हुआ है, ये सब जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा. We don't want a general war of that kind. तो हालांकि कहना बड़ा इसका, I mean, it's a very difficult thing to state it like this. मगर मैं हिचकिचाता नहीं हूं कहने में कि हमें पेशेंस रखना पड़ेगा. We have got awkward people, awkward countries around us who want to test our patience, who want to test our resilience. ठीक है, हमें अपने आप को इतना ताकतवर बनाना चाहिए कि वो कोशिशें जो हैं वो नाकारा हो जाएं, वो कोशिशें भी ना कर सके हमको प्रोवोक करने की. Last question, sir. The radical elements from Taliban have already succeeded in getting hold of radicals in Pakistan polity through Imran Khan and KP. Isn't the threat already at our doorstep and not too far off? Yeah, I alluded to this in my discussion with General Shankar बीच में कि देखिए हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि इंडिकेटर्स हमारे पास आते रहेंगे. ये एक इंडिकेटर है बट स्टिल वेरी फार अवे, स्टिल वेरी फार अवे. I don't think it is still the manifestation of the second cycle as I was talking to you about. ये और फैलना पड़ेगा. पाकिस्तान आर्मी के अंदर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर ही रेजिस्टेंस आएगी. I have spoken to a lot of Pakistani generals who are of the opinion that no longer can they do what they did in 1989-90. वो जमाना अलग था, वो एनवायरनमेंट अलग था. उन्होंने बिना सोचे, बिना देखे कि किस तरफ ये कॉन्फ्लिक्ट जाएगी और कहां टर्मिनेट होगी. मैं हर दफे कहता हूं पाकिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएटर है, मगर सबसे कमजोर कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेटर है. उसको टर्मिनेट करना नहीं आता है.
ठीक है, इनिशिएट करना तो कोई भी कर सकता है, मगर दिमाग चाहिए टू टेक इट टू अ लेवल वेयर यू वांट टू टर्मिनेट इट। पाकिस्तान ने रियलाइज दिस, आई थिंक स्लोली रियलाइज कर रहे हैं वो, कि इनिशिएशन तो कर लेंगे वो बहुत आसानी से भारत के साथ, मगर टर्मिनेशन हमारे हाथ में होगा। तो इसलिए मैं समझता हूं ये बहुत धीरे धीरे उभरेगा, उभरेगा जरूर, मगर धीरे धीरे उभरेगा। इट विल नॉट कम सडनली लाइक दिस। इसके बाद सरकार, ये सरकार जो है, इट लॉट डिपेंड्स ऑन हाउ दिस गवर्नमेंट गोज फॉरवर्ड। ये गवर्नमेंट, ये सरकार जो है अगर स्टेबल रही, अगर 5 साल चल गई तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होगी। इट वुड हैव स्टेव्ड ऑफ दिस पॉसिबिलिटी ऑफ दिस थ्रेट डेवलपिंग फर्दर, मगर मेरे ख्याल से इस 5 साल नहीं चल सकती। Right, sir. I finished with the questions. I'll take a few comments which have come from across. He says MQM mandate is not real. PTI mandate was stolen and handed over to MQM. This is the reality. And he also says Nawaz Sharif is corrupt and always suits Pak military corrupt generals. That's why he comes again and again. And he has no roots in the Pakistani people. World should stop financial aid to Pakistan government. No money is spent on Pakistani people's general. Pakistani people's generals and politicians plunder this money and enhance their foreign wealth. It is quite evident. We know that Qadianis are human and they must be treated as human. I agree with you 100% completely. And of course, there's someone who comes out and says, "Poor Indian generals." Well, all the best. Please carry on with your this rich statement, Pakistani. Shankar, this is a very good statement. Poor Indian generals. It shows that these poor Indian generals have the capability to keep looking at Pakistan with that hawk eye. ये याद Hawkeye. रखिएगा, ये हॉक आई है हमारी पाकिस्तान के ऊपर, और हर निगरानी के साथ हमारे पास कुछ ना कुछ होता है कहने का, which I'm sure people are watching, people are getting sensitized in India. That is what is important. That is why the poor Indian generals always will rule the roost. देखिए, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ओवर एंड अबव व्हाट जनरल हसनैन हैज सेड, poor Indian generals have kept India together, right? We work for this nation and nation को जोड़ के रखते हैं. The rich Pakistani generals have lost half the nation in 1971, और जो भी वो कर रहे हैं बाकी नेशन को भी बंटवारा करने के चक्कर में है. तो आप कुछ सोचिए कि आप पोअर इंडियन जनरल्स अच्छे हैं या रिच पाकिस्तानी जनरल्स अच्छे हैं, और किस आवाम के लिए अच्छे हैं. हमें कोई इतराज नहीं है, हमें पोअर बोलिए, हम उसी में खुश हैं. ओके, he says, dear brother, dear brother Pakistani, general are very rich because they are corrupt. These Indian generals poor because they do their duty honestly. Thank you, Mohammed. You actually reinforced what I was trying to say. Right? And I think, dear brother, creation of Pakistani was a huge mistake of Qaeda-e-Azam or any other people involved. Yeah. And last, of course, Qadiani says, Mohammad Taj, it was us Qadianis who created Pakistan. Fine. While that is a healthy discussion who created Pakistan, unfortunately, the unhealthy part of it is a lot of people in Pakistan were destroying Pakistanis and their own culture. And that is changing. But having said this, sir, I think the discussion was at a different level. और जो पन्ने हमने नए पाकिस्तान के बारे में खोले, they were quite unique. And the most important thing is what you said. Pakistan should be monitored. The moment the threshold of instability goes down below a particular level, our antenna should be up, and we have to see किस तरीके से the threat starts manifesting, because history has a dirty habit of repeating itself, right? And those who don't, disregard history are consigned to live through it in the future. So that is something for us to take home. And I'd like to thank you, sir, for these great thoughts today, because I thought today was something different and something very intellectual discussion we've had. Normally हम बोलते रहते हैं पाकिस्तान ये है वो है वगैरह वगैरह, but I thought we took it to a different level. I must honestly thank you. I learned from you as always. When I learned from you, as when you were my co-commander, I was your GOC. Right?
What I thanks a lot. That's enjoy what. with your program, is that unlike every other program in which you just sit and badmouth the neighbor, here we actually look at it from an intellectual angle, and that is the depth to which we have to go to understand it and how to neutralize the negativities which are potentially likely to arise, which will come in our direction from that side. That's the only way it can be done. By bad mouthing, you would achieve nothing. You can only raise a couple of claps here and there, and that's about all. And that poor Indian Army generals are not good at doing. Yes. Thanks a lot, sir. I think we've had a terrific thing. जितने भी आपके क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं हुए, जो आंसर नहीं हुए, वो कृपया आप कमेंट्स में डाल दीजिए. I will take those questions and answer them on Sunday when we have an open session. Right? Thanks a lot. Good evening. And sir, Jai Hind to you and Jai Hind to all viewers. Thank you very much. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir.